भारत माता की, भारत माता की। Education is the most powerful weapon in the world which you can use to change the world. Quote unquote Nelson Mandela. First of all, I would like to thank our respected MD sir for giving me this opportunity to share my thoughts. A very warm good morning to everyone. Before I am going to start my speech, I would like to share a quotation. You all have to give the answer whose quotation this is. The quotation is, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है. Dr. B.R. Ambedkar. Again, I would like to ask a question. You all have to give the answer. What is education? Or I would like to say, what do you mean by education? What is the real value of education in our daily life? Can you give anyone answer? Okay, different persons have different answer of this question, but I would like to say the correct answer according to my opinion. The answer is, education is the powerful weapon which you can change the world. Means education is not something that you are able to learn, speak, write something. The education means you have to identify what is right and what is wrong in your life, and you have the ability to walk on that right path. This is the value of education in our daily life. So we can say that education is a powerful weapon which we can change the world, according to the Nelson Mandela. Again, I would like to share a small story. You all have to give the answer whose story this is. A boy was born in a very poor and lower caste family. He was not allowed to go into the school. But after lots of struggle, he studied outside of the school. Due to his passion, one king supported him to study from the abroad. He did double PhD, one from the Columbia University of USA and another one from the London School of Economics, London. After the independence, he played a vital role for writing the Constitution of India. He wrote Indian Constitution in 2 years, 11 months and 18 days. He is not a leader of only the Dalits and lower caste. He also played a vital role for upliftment of women, and he provided the right of vote to the women. So we cannot limit him a leader of lower caste family. He was a leader of masses. So whose story this is? Yes, this is the story of Dr. B.R. Ambedkar, who was the founder of Indian Constitution. Because of his lots of efforts, we are standing here. We have a right to vote. We have to right to speech. We have to right to walk with everyone. So, what is the moral of this story? The moral of this story is resources can never be obstacle in your life. कभी भी रिसोर्सेज जो होती है आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती है, अगर यू हैव अ पैशन एंड डिटर्मिनेशन एंड डिजायर टू डू समथिंग. अगर आप अपने जिंदगी में कुछ भी अच्छा करना चाहते हो तो रिसोर्सेज कभी भी बाधा नहीं बन सकती है. हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हम लोग अच्छे रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं. हम आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, बट स्टिल वी डोंट हैव अ गुड कैरेक्टर, सो वी कैन नॉट सक्सीड इन आवर लाइफ. कैरेक्टर मेजर्स एवरीथिंग. हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, टॉपर है, लेकिन हमारी कैरेक्टर सही नहीं है तो हम अच्छे रास्ते पे नहीं चल सकते हैं. मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा आपको सोहनलाल द्विवेदी की, जो कि इस प्रकार है. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धारे न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार.
कुछ पंक्तियां मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की सुनाना चाहूंगा, जो कि इस प्रकार है विघ्न कौन ऐसा जग में जो टीक सके वीर नर के मग में, खम ठो ठेलता जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मैं 2 लाइन और आपको सुनाना चाहूंगा दोस्तों। मुश्किलें दिल की इराजे अजमाती है, मुश्किलें दिल की इराजे अजमाती है, स्वप्न की पर्दे निगाहों से हटाती है, निगाहों से मत हार गिरकर ऐ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ 2 पंक्तियां आपको संस्कृत की सुनाना चाहूंगा। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता, पात्रत्व धनापूर्ति धनात् धर्म सुखम। यानी कि विद्या से हमें एबिलिटी मिलती है और एबिलिटी से हम धन अर्जित कर सकते हैं, धर्म से हमें धर्म की प्राप्ति होती है और धर्म से हमें सुख की प्राप्ति होती है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।